Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. Hope you are safe and sound by the grace of Allah Almighty. Today we are going to learn something about active and passive voice in English. We will look at the basic structure, basic rules while converting a active sentence into a passive sentence. हम आज के लेक्चर में ये सीखेंगे कि कैसे हम इंग्लिश ग्रामर में इंग्लिश में एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी हैव टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ द एक्टिव वॉइसेस और उनका जो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम जो है उसको तब्दील कर सकते हैं और क्यों करते हैं, उनकी रीजंस क्या है. और फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव. दोनों को डिफाइन करेंगे, उनके रूल्स देखेंगे, पैरेलल में एक दूसरे को देखेंगे कि एक्टिव के व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस ऑफ ए सेंटेंस एंड व्हाट इज़ द पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. एंड देन वी विल टॉक अबाउट द फार्मूलाज. उन फार्मूलाज पे बात करेंगे जिनको हम सामने रख के उन सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में, एक्टिव से पैसिव में. तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ चलते हैं. So here is passive voice. In this lecture we will talk in detail about passive voice. But first of all I will try my level best to tell you what is the difference between voices in English grammar. There are two types of voices. First of all, active voice. So active voice refers to that type of voice where subject of a sentence performs some action. For example, look at here. He buys new books. It means he is a subject here and buy is a action of subject and new books. These two words are being treated as an object of this sentence. So active voice जो है वो इंग्लिश ग्रामर में वो किस्म है वॉइस की कि जहाँ सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ना किसी चीज़ पे वो काम करता है. Second voice in English grammar is passive voice. So passive voice is a type of voice in English grammar where clearly look at here, please carefully look at here, object shifts to subject of a sentence. Important thing to remember here is that meaning of the sentence does not change in both voices, but structure is changed accordingly. Example, I have just converted the active of previous sentence into passive here. He buys new books is the active voice here and I have converted this sentence into passive here. New books are bought by him. Actually, we have shift object to subject in this sentence. New books have taken the place of subject here and the he has taken the place of object in a previous sentence. So new books are bought by him. So आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस जो है वो टाइप जो है इंग्लिश ग्रामर में वो किस्म है वॉइस की कि जहाँ ऑब्जेक्ट है वो जगह लेता है सब्जेक्ट की और सब्जेक्ट जगह लेता है वो ऑब्जेक्ट की, और जो वर्ब है उसका जो एक्शन है वो वहीं रहता है, वो उसकी जगह तब्दील नहीं होती. बट आगे जाके जब स्ट्रक्चर इसका देखेंगे उसमें आपको थोड़ी सी उसमें चेंज नज़र आएगी. जो एक्शन है उसकी जो फॉर्म है वो हम वहाँ चेंज करेंगे. सो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड. So further talk about passive. The passive voice in English is used to express what is done to someone or something. तो पैसिव वॉइस जो इंग्लिश में है हम इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी शख्स को हमने देखना है कि उसके साथ क्या हो रहा है या किसी चीज़ के साथ क्या हो रहा है. पहले हमने देखा कि अगर एक्टिव की बात करें, यहाँ मैं एक बात आपको और क्लियर करूँ. इफ़ यू हैव टू लर्न पैसिव वॉइस डेफिनेटली यू विल बी फेमिलियर अबाउट एक्टिव वॉइस, आई मीन टेंसेस. सो ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई है. आई एम गिविंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से उस लिंक से वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. इवन देन इन दिस वीडियो आई विल टेल समथिंग अबाउट यू अबाउट एक्टिव एंड पैसिव आवर टेंस इन पैरेलल. फर्दर जब हम आगे जाते हैं उस पर बात करेंगे. सो एग्जाम्पल्स, दैट पोएम वाज रिटन बाय विलियम्स वर्ड्सवर्थ.
कि ये पोएम लिखी गई विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़रिए से। आई एम बीटन बाय द स्ट्रेंजर, मुझे अजनबी के ज़रिए मारा गया। अ सुपर मार्केट इज़ बीइंग बिल्ट नियर मोटरवे, एक सुपर मार्केट जो है वो मोटरवे के नज़दीक तमीर की जा रही है। इन फर्स्ट टू सेंटेंस यू कैन सी I have used the word buy. The buy is used an agent here, and sometimes we don't need to use this buy because of what, ये भी आगे चल के आपको मैं बताता हूँ। So actually हमें समझना है, we have to understand when to use the passive voice, actually हमें क्यों use करना है। So English language expert emphasize we should speak and write in the active voice, but sometimes we need passive voice because it can be very useful in formal writing such as scientific reports, news reporting, when we want to emphasize on results rather than who did the action. So जो expert है language के, वो इस बात पे जोर देते हैं कि हमें जब लिखना है तो बोलना है तो हमें ज़्यादातर एक्टिव में ही बोलना चाहिए। एक तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं, समझ नहीं आती कि क्या कहा जा रहा है, बट सम टाइम लेकिन हमें बाज़ुकात जो है जब हम फॉर्मल राइटिंग लिखते हैं, राइटिंग में आते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है और हमें यूज़ करना पड़ता है पैसिव को। कहाँ जहाँ हम साइंटिफिक रिपोर्ट्स लिखते हैं, जहाँ हमें पता नहीं सम टाइम होता कि किसने ये काम किया, किसने ये चीज़ डेवलप की, और हम जस्ट ये बताना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल the computer was invented in a century, 20th century or 19th century, so हमें पता नहीं एग्जैक्टली डेट का होता, तो हम ये बता देते हैं कि इस सेंचुरी में फलां चीज़ की जो इन्वेंशन हुई थी। न्यूज़ रिपोर्टिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। जब न्यूज़ रिपोर्टिंग में हम ये बताना नहीं, एक्चुअली खबर तो देना चाह रहे होते हैं लेकिन बताना नहीं चाह रहे होते कि कहाँ इसका, किसने इसको जनरेट किया है। So the big question is here, when and why do we actually need to use the passive voice? कब और क्यों हमें असल में इसकी ज़रूरत होती है? So my dear students and friends, look at carefully here. When we want to, first of all, number one, when we want to change the focus of a sentence, ये थोड़ा सा पहले भी आपने देखा है, आपको मैंने बताया है कि जब हम उसका जो सेंटेंस का फोकस है, उसका मरकज़ जो है, उसको चेंज करना चाहते हैं। At the time of writing or speaking, sometimes the object of the sentence is more important than the object. Here we change the focus of the sentence, active sentence, into passive sentence. Look at the example here. Active. Teachers teach English language course efficiently. And now we are converting this active into passive. Look at here. English language course is taught by the teachers efficiently. Here we have to make focus. We have to make focus on English language course. We are not going to making the focus of a sentence about teachers. So here our focus is on the English language course, not on who teaches. So that's why we were in need of passive here. So secondly, if we don't know who is the doer, who did the action, हम नहीं जानते कि किसने ये किया है और कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल फोन हैज़ बीन स्टोलन, मैं कहता हूँ कि मेरा सेल फोन जो है वो चुरा लिया गया है। अब मुझे नहीं पता किसने चुराया, आई डोंट नो हु हैज़ स्टोलन इट, मुझे नहीं पता। सो दैट्स वाई मुझे जो है अपनी जो रिटन में या स्पोकन में, अगर मैं ये इंग्लिश में बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पैसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Thirdly and importantly, if we do not want to tell something about the doer or about the subject of a sentence, बहुत दफ़ा सिचुएशन ऐसी आपके सामने आ जाती हैं, हमारे सामने, कि हमें पता तो है कि किसने ये काम किया, बट एक्चुअली हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, या उसको जस्ट बताना चाहते हैं उसके सामने, बट उसका नाम लिए बगैर, या सम टाइम हम उससे फ्राइटन होते हैं, हम डरते हैं उससे कि अगर हमने बताया तो ये हमारे अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा, लेकिन हम बताना भी चाह रहे होते हैं, तो हम ये वे इख्तियार करते हैं, हम पैसिव को चूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्टिव। सो द एप्पल्स वर ईटन, यहाँ लिखा है कि सेब
खा लिए गए थे। पता नहीं किसने खाए, लेकिन अगर मुझे पता भी है, आई डोंट एक्चुअली वांट टू से दैट हु एट द एप्पल्स, मैं नहीं बताना चाहता, नहीं कहना चाहता कि किसने ये खाए। तो ये हिडन लैंग्वेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हिडन जब हमने करनी हो चीज़ें, सब्जेक्ट को हिडन करना हो, किसने किया, कब किया, तो फिर भी हमें पैसिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So fourthly, it is obvious who does something. ये तो ज़रूरी है कि कोई ना कोई इसे करता है, लेकिन उसके लिए वहाँ हमें बताना ज़रूरी नहीं होता। I was examined in the hospital. जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मेरा मुआयना किया गया। तो मैं इसलिए यहाँ नहीं लिखना चाह रहा कि obvious है कि I know that only doctors examine, so I don't need to add by the doctor. तो यहाँ मुझे by the doctor जो है, जो एजेंट मैंने as a word आपको यूज़ किया था पहले starting of my lecture, बाद में further I will talk about by in detail इसके बाद जो further है। But I was examined in the hospital. Look at here कि मैंने कहा कि मेरा मुआयना किया गया हॉस्पिटल में। अब मुझे बताना यहाँ ज़रूरी नहीं है कि by the doctor, because हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ही एग्जामिन करना होता है, not other than anyone else. He was arrested. उसे गिरफ्तार किया गया, कर लिया गया। I know that the police arrest people, so I don't need to add by the police. मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है, और हम बताना चाह रहे हैं कि he was arrested, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो डेफिनेटली लॉ के अकॉर्डिंग जो है, अगर किसी को गिरफ्तार करना है तो वो स्टेट की पुलिस ने ही करना होता है। सो दैट्स वाई आई डिडंट ऐड बाय द पुलिस हेयर। अगर मैं करता तो फिर भी ठीक था, नहीं किया तो क्लियरली पता है कि किसने किया। सो ये भी एक कंडीशन है जिसके लिए हमें इसका यूज़ करना पड़ता है। बट हर बात की जो मैंने 3-4 पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी 3-4 पॉइंट प्रीवियसली। सो द एम ऑफ द पैसिव इज कि हमें जब साइंटिफिक रिसर्च रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, न्यूज़ बतानी होती है, या वी हैव टू हाइड द सब्जेक्ट, सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम इसकी जगह जो है एक्टिव की जगह पैसिव का यूज़ करें। So start before the starting of passive-wise, discussing the structure of passive-wise, the most important points to remember while making passive-wise, and these are the very important point. If you learn by heart these point, अगर आप इनको understand कर जाते हैं तो I think there will be no difficulty for you while converting active-wise into passive-wise. So these sentences this is a lecture especially for a grade 9 student, because एक क्वेश्चन आता है जहां आपने where you have to change the voice of the following given sentences, जहां आपने वॉइस को चेंज करना हो एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है पैसिव उनके लिए भी। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट वन। The subject of the sentence take place of object. ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम चेंज करते हैं तो फिर क्या होता है कि शिफ्ट करता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली शिफ्ट टू द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। क्लियरली आपको समझ आ जाए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह जाता है। मीनिंग एक्चुअली डज नॉट चेंज ऑफ एनी सेंटेंस, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है जी? एक्टिव, ही राइट्स अ लेटर। So look at this sentence, subject is he and letter is object. So we are going to make passive of this sentence. So a letter is written by him. By को फिर again मैंने यहाँ as an agent use किया है। He writes a letter, वो खत लिखता है, खत उसके ज़रिए से लिखा जाता है। A letter is written by him. So देखने वाली बात यहाँ है केयरफुली कि ऑब्जेक्ट शिफ्ट टू हो गया है उसकी जगह पे, सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट होकर चला गया है हिम की उसकी जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे। बट जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इस पहली बात को भी यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट नंबर 1 वेरी क्लियरली एंड वेरी केयरफुली, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल while making or while converting active into passive. So second most important is here the word by is used an agent. I have talked about word by previously. बहुत ज़्यादा मैंने बताया आपको कि word by जो है वो as an agent यूज़ किया जाता है जब किसी के ज़रिए से काम किया जाता है।
But sometimes we do not choose by because we don't want to nominate the person doing something. ये भी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात हम बाय को वर्ड को नहीं लगाते ताकि हम जो है, क्योंकि हम उस पर बात नहीं करना चाह रहे होते कि किस शख्स ने ये काम किया है या किस के ज़रिए ये काम हुआ है. एग्जाम्पल, रॉन्ग डिसीजंस आर बीइंग मेड इन दीज डेज. गलत फैसले लिए जा रहे हैं इन दिनों में. Here we don't want to tell by whom the wrong decisions are being taken. किसके ज़रिए लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट है, कोई इंस्टीट्यूशन है या whatever, कौन ले रहा है, हम बताना नहीं चाह रहे. So third ये most important point you have to remember here कि आपने ये याद रखना है कि जो हमेशा इसमें पैसिव वाइल मेकिंग पैसिवाइज थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करनी है. थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड इन ऑल टेंसेस. सब के सब टेंसेस की जब आप पैसिवाइज में चेंज करेंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन यू हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ये आपने क्लियर अपने ज़हन में रखना है. एंड नंबर 4, एक्टिव कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. जैसे पहले बात हमने की कि ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में भी मैंने डिटेल से बात की है. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव गिवन a link in description below. मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक, आप वहाँ से लिंक देखें और टेंसेस को देखें. बट इसमें भी मैं आपको थोड़ा बहुत टेंसेस के बारे में बताऊंगा. इंशाल्लाह कन्फ्यूजन जो है वो आपकी दूर होंगी. बट इवन यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन क्लिक द लिंक एंड यू कैन सी द टेंसेस. एक्टिव कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव. यहाँ जो मैं बात एक्चुअली करना चाह रहा हूँ कि एक्टिव कभी भी चेंज नहीं किया जाता पैसिव में, हो ही नहीं सकता इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. अगर सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट नहीं है, वो चीज़ नहीं है जिस पे काम हो रहा है. फॉर एग्जांपल कि ही राइट्स अ लेटर, तो ही सब्जेक्ट है, काम वो लेटर पे कर रहा है. अगर लेटर उसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी कैन मेक द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस. हम उसका नहीं बना सकते, उसको वी कैंट कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट. तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं, आप उसका पैसिव नहीं बना सकते. So another very important thing क्या है, changes of pronoun. pronoun को change अपने करना है. जब अपने definitely when we are going to shift object to subject and subject to object while making passive voice हम बनाते हैं, तो हमें ये थोड़ी सी pronoun की changes होती हैं. I changes into me, we changes into us, you changes into you, he changes into him, she changes into her, it changes into it, and they changes into them. For example, the first sentence, he writes a letter and a letter is written by him. So here we have changed he into him. इसी तरह accordingly हमने चेंजिंग करनी है जब हमने पैसिव में इनको करना है. So now let's start the very first and present indefinite tense. First we will look at the active structure and then passive. जब हम पहले इसको एक्टिव को देखेंगे फिर पैसिव को देखेंगे. एक्चुअली आई एम गोइंग टू कवर फर्स्ट 3 टेंसेस ऑफ प्रेजेंट सीरीज इन दिस लेक्चर. मुझे कवर करने हैं इसमें मैं इसी डिटेल में कि आपको फर्दर अलग उसके लिए वीडियोस ना देखनी पड़े. एक ही कंप्लीट पैकेज आई एम गोइंग टू गिव यू इन अ सिंगल वीडियो. इसमें बता रहा हूँ सेकंड वीडियो इंशाल्लाह जो है पास्ट में भी बनेगी और फिर एज वेल एज अबाउट ऑन फ्यूचर उस पर भी बना दूंगा मैं. So look at the present indefinite tense. First of all, I am going to discuss about the active structure. Previously, I have made a video on present indefinite tense, present continuous tense in detail. You can see, you can watch carefully, closely these videos for your better understanding. But in short, I am again discussing the structure of active and as in parallel passive. So active voice में क्या होता है? Identification in Urdu. This is the question of related to relevant to grade 9. ये grade 9 से है, उनके भी पेपर में आता है कि जो है उर्दू में ये जो सेंटेंस दिए जाते हैं उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है. सो आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू, इसके फिक्रों के आखिर में ता है, ती है वगैरह आता है. एंड द फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एडिशन ऑफ एस आर ई एस वो यूज़ की जाती है. वेयर सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ही शी इट आर प्रॉपर नाउन, वहाँ हम एस और ई एस ऐड करते हैं. एंड हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ दिस टेंस इज
are do and does. Does is used with he, she, it and proper noun, and do is used with I, we, you, they, etc. And look at the passive of present indefinite tense. Whenever we change the active of present indefinite tense into passive of present indefinite tense, तो क्या तब्दीली पहली होगी? Form मैंने clear आपको बता दिया. I have told you already. While making passive, we will always use third form of verb. There is no confusion in that specific point. And look at here, helping verb of active are do and does. But while changing the sentence of an active to passive of a present indefinite tense, we will use is, am, are. Is used with singular, am is with I, and are with you and plural things जो है उनके साथ हम इस्तेमाल करेंगे. But clear जो पैसिव की जो आइडेंटिफिकेशन है पैसिव वॉइसेस की, उसमें एक तो बात है कि थर्ड फॉर्म हमेशा आपको नजर आएगी, एंड सेकेंडली उसका एडिशनल हेल्पिंग वर्ब उसके साथ इजाफी जरूर होंगे. इसी तरह आपको ये डिफरेंस क्लियर करेंगे दूसरे टेंसेस के साथ, एक्टिव के साथ. So 4-1 इधर कम बैक टूवर्ड्स एक्टिव वॉइसेस की तरफ दोबारा जरा आए. पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. And while making he sells his house. While making positive of this sentence, look at here in front. Positive sentence कैसे बनेगी जी? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑलरेडी आपको बताया है. फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसमें से क्या लगेगा? डू लगता है, इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, वो ऊपर दिए गए हैं. प्लस थर्ड फॉर्म है एंड प्लस बाय इफ नेसेसरी. अगर जरूरी है तो बाय का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज नहीं. एंड प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा. यहाँ बात इंपॉर्टेंट याद रखने की है, ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सो अगर आप इस साइड पे देखें तो ही सेल्स हिज हाउस, क्लियरली कि ही सेल्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वो अपना घर बेचता है. तो अगर हम इसे करेंगे तो ये जो हाउस है, हिज हाउस इज सोल्ड बाय हिम, तो हिज हाउस ने आ गया सब्जेक्ट की जगह पे और ही चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पे. तो यहाँ क्लियर हो गया कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया है. सोल्ड लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई है और बाय का इस्तेमाल हमने कर दिया यहाँ. अब देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. नेगेटिव सेंटेंसेस, द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट इज दैट सब्जेक्ट पहले है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस यहाँ देखें तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें इज हो सकता है, एम हो सकता है, आर हो सकता है, एंड देन नॉट लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड बाय इफ नेसेसरी और सब्जेक्ट. हियर आप अगेन देखेंगे ही डज नॉट सेल हिज हाउस. मैंने यहाँ बताया था कि डू डज या ई एस का इजाफा हम तब करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट होगा. सो दैट्स व्हाई वी अप्लाई हियर डज नॉट सेल हिज हाउस. एंड अगर हम यहाँ देखें तो चेंज होने के बाद, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपस में चेंज होने के बाद, हिज हाउस इज नॉट सोल्ड बाय हिम, यहाँ हमने इज यूज किया है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. सो कमिंग टुवर्ड्स नाउ interrogative sentences, the structure of present indefinite tense here, helping verb पहले है, then subject, then verb, then object. And while making passive of this sentence, interrogative sentences, the structure of interrogative sentences is here, helping verb, तीनों में से कोई is, am, are है, then object है, then verb third form, and then by, and then subject. Is his house sold by him. तो आपने देखा कि हमने यहाँ पहले तो डज लगाया था जब एक्टिव था, बट जब हमने यहाँ इसको पैसिव किया तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, नॉट डज आएगा. ये एक क्लियर आपने इसकी जो डिफरेंस है वो ज़हन में रखना है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस. ये मैंने क्लियरली आपको जहाँ तक पॉसिबल मुझसे हो सका है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टेल यू व्हाट how to make active and passive of present indefinite tense. Now let's move towards present continuous tense. First of all, active voice. So active voice identification in Urdu इसके फिक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है. Second, form of verb. First form of verb plus ing because of continuous tense is used in this tense, and helping verbs of this tense are is, he, she, it के लिए, am for I and are, we, you, they. Now look at the passive of this tense. Form of verb always, there is no confusion, we have to use third form of verb. And now attentively look at here.
Is being, am being, are being are the helping verb of passive voice of present continuous tense. Now look at the structure of positive sentences of active voice. First of all, we will translate the subject of a sentence, then helping verb, then verb, then object. Now positive sentences of passive voice. Object will be at the starting of the sentence, then helping verb is am, are, but we use being with is, am, or are, plus third form and plus by if necessary, plus subject. For example, she is taking medicine. So we are now, let's see, we are going to convert this active into passive. Medicine is being taken by her. Medicine, the word medicine, object has taken place, the subject here, and subject has been shifted in place of object in this sentence. Clearly आपको पता चल गया, इसमें यूज हुआ है is being, उधर था is only simple is, लेकिन इसके साथ एक वर्ड हमने ऐड किया being, ये चूंकि helping verb है passive का, so medicine is being taken by her. The second type of sentence is negative sentences. While making negative sentences of present continuous tense, first of all we will translate subject, then helping verb, then not, then verb, and then object. Now come towards negative sentences of passive. Object will be here, then helping verb is, am, are, then we will place not and then being, plus third form of verb will be used here, or फिर by if necessary, and then subject. Look at the active of negative sentences of present continuous tense. She is not taking medicine, and now we are going to convert this active into negative passive of present continuous tense. Medicine is not being taken by her. हमने क्या किया कि मेडिसिन के बाद लगाया एक वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब का इज, और प्लेस हमने किया नॉट दरमियान में, एंड देन बीइंग टेकन बाय हर. So now move towards interrogative sentences. First of all, we will translate helping verb, then subject, then verb, then object. And in interrogative sentences of present continuous tense, is, am, are, object, being, and verb plus third form by if necessary. अगर ज़रूरत है तो तब लगाएंगे, नहीं तो फिर उसके बाद subject. Is she taking medicine? Is medicine being taken by her? So dear student, that's all about present continuous tense. Let's move towards present perfect tense. So carefully look at the active of this sentence. Identification in Urdu, इसके फिक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह आता है. Form of verb in this tense is also third form of verb is used. Helping verb has or have. Has is used with he, she, it, proper noun. Have, I, we, you, they, etc. And as previously while making passive voice, here also will third form will be used. ये सब में यही है, कोई confusion नहीं है. And helping verb of passive voice of present perfect tense has been and have been. So look at the positive sentences. Subject, helping verb plus verb plus object है. इस पे जब हम करेंगे तो ये तरतीब होगी. And positive sentences में object जो है वो फर्स्ट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब, देन हैज, हैव, दोनों में से कोई एक और प्लस बीन लगाएंगे, देन थर्ड फॉर्म, एंड देन बाय if necessary, and plus object. Look at the positive sentences of present perfect tense. She has taken medicine. They have finished their work. So first sentence, medicine has been taken by her. Yes, object change हो गया, वो subject की जगह पे आ गया है, और subject object की जगह पे चला गया. Their work has been finished by them. यहाँ भी वही सिलसिला हुआ है, structure change हुआ है और हमने उसको passive में change किया है. Next one is negative sentences. First of all, we will translate subject, then helping verb plus not plus verb plus object, and then negative sentences of passive of present perfect tense. Object पहले होगा, then helping verb has, have, and then we will place not between the has, have and been. इसके दरमियान में हम not लगाएंगे, plus third form of verb, and by if necessary, and then subject. Look at here, she has not taken medicine. Medicine has not been taken by her. They have not finished their work. Their work has not been finished by them. So lastly, interrogative sentences.
First of all, we will place helping verb at the beginning of the sentence, then subject, then verb plus object. And now interrogative sentences of passive voice of present perfect tense. इसमें क्या करेंगे जी? Has, have, and then object plus been आएगा, फिर third form and plus if by अगर आपको ज़रूरत है तो लगाएंगे, otherwise नहीं, and then plus subject. Has she taken medicine? Have they finished their work? Has medicine been taken by her? Has their work been finished by them? So this is all about the present perfect tense, active and passive. In this video actually we have learned about what is the difference between active and passive, and then important rules of making passive voice, and then we have covered three tenses: present indefinite tense, present continuous tense, and present perfect tense. Last वाले जो होते हैं, lastly जो present, there are no passive voice of present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, and future perfect continuous tense. Hopefully you will be able to understand better and better in this video about what is the passive and what are the active voices. So आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे. होपफुली आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर होंगी. आप कमेंट करें और मुझे बताएं फर्दर इफ़ एनी चेंज मुझे करनी चाहिए इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए, ये आप मुझे इसके बारे में ज़रूर आगाह करें. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक best video for your educational purpose. So thank you my dear students and my friends and learners. See you next inshallah in next video.